Hi everyone. Yesterday we conducted our newspaper prelims document. We published the newspaper prelims document for your 26 prelims examination. Now, basically this article was the part of yesterday's document, and you see this article how prelims questions can be framed. So we cover article only relevance for the prelims examination first of all, because we are dealing only with the prelims examination. So सारे articles from the 5 newspaper will be covered here for the prelims examination. Now if you see this article, this talks about the cess and surcharge, a beautiful article where we can learn so much about the prelims examination. Okay, now from this article you see here, the very first question we asked here is the cess and the surcharge are levied by the union government. First is here is union government for the purpose of the union under article 271. Article also is very very important. ठीक है ना, 271 में लिखा हुआ है कि पार्लियामेंट कैन पुट एक्स्ट्रा टैक्स एंड दैट विल बी द पार्ट ऑफ द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया. ठीक है, नाउ इफ यू सी द सेकंड स्टेटमेंट सेज द प्रोसीड्स ऑफ द रेवेन्यू अर्न्ड via the various cess and surcharge would not be shared with state. True or false? Again, true or false. Every statement will be in the form of true and false. We don't give you options because we want to prepare you tough from the very beginning. Okay, now true false रहेगा तो ना ही आपको कोई पैटर्न पता चलेगा और ना ही आप कोई गेस वर्क करोगे. इट्स ऑल अबाउट लाइक आपको ट्रू एंड फॉल्स, यहाँ कोई एलिमिनेशन काम नहीं करना है, पूरा फैक्चुअल. द फर्स्ट 6 months totally it's gaining the factual knowledge. Okay, after January our pattern is designed in a way that after January you will learn how to eliminate everything, right? अभी हमें knowledge gain करना है. Now the proceeds is not distributed. Now you see is article 271 में लिखा हुआ है कि it lays down what tax may be included in the divisive pool of the states which should be distributed among the states and following amendment 2000 cess levied for the specific purpose under any law passed by the parliament is exempted from the divisible pool. ठीक है, now this is what you understand. This is a like would not be shared. This is a true statement. ठीक है, now the proceeds collected from the surcharge and cess will be the part of the consolidated fund. It's a true statement. अब आप देखो यहाँ पे एक इमेज, which of the following cess surcharge contribute the highest total collection. Again this article will come into the picture and when you see this article it says here the GST का जो cess है आप देखो it's a highest. Okay, it's the highest one. आप देख लो इधर for the last 5 years it's actually the highest one. और आप देखो लास्ट क्वेश्चन जो मैंने पूछा है आपसे, दैट रीड फ्रॉम द चार्ट फ्रॉम विच ऑल सेक्टर द सेस एंड सरचार्ज इज लिवाइड. अब आपको थोड़ा सा एक नजर भी देना है इन नंबर्स पे, राइट? एंड व्हेन यू राइट योर मेंस आंसर और ऐसे आंसर यू कैन पुट समथिंग. दैट्स व्हाट प्रीलिम्स का जो क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन है इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द गोल्ड टाइड. गोल्ड टाइड विल गिव यू डेफिनेटली लाइक एक्चुअल एंड द जेन्युइन एक्सप्लेनेशन. अब आप देखो यहाँ से ये जो नंबर्स हैं आपको यहाँ से पता चल गया. हेल्थ एंड एजुकेशन सेस वो भी बहुत ज़्यादा है. देन वी हैव रोड एंड इंफ्रा सेस, वो भी ज़्यादा है पर हेल्थ एंड एजुकेशन से कम है. ओके, नेशनल क्लैमिटी जो हमारा सेस है दैट इज ऑल्सो लेस. उसके बाद आप देखो सेस ऑन क्रूड ऑयल इज ऑल्सो लेस और जीएसटी का सबसे ज़्यादा है. ओके, इट्स सबसे ज्यादा क्या है जीएसटी पे. तो ये एक क्वेश्चन बन जाता है. एक आर्टिकल से आपने यहाँ पे काफी कुछ सीखा एंड दैट इज व्हाट कॉल्ड द लर्निंग प्रीलिम्स ऑर्गेनिक करंट अफेयर्स, दैट इज न्यूज़पेपर. ठीक है, ऐसे ही आप देखो वी हैव सेवरल आर्टिकल्स लाइक द कोकोनट ऑयल एंड वी आस्क्ड यू अबाउट द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ द कोकोनट ऑयल. देखो ऑयल का प्रोडक्शन सबसे ज्यादा कहां पर है? इट्स इन द इंडोनेशिया और फिलीपींस, राइट? यू विल सी फ्रॉम द एक्सप्लेनेशन. पर जब आप कोकोनट प्रोडक्शन की बात आएगी तब देखोगे इंडिया इज लार्जेस्ट. ठीक है ना, आपको एमएसपी मिलता है कोपरा पे, यस वी गेट एमएसपी. आपका एडिबल ऑयल्स में सबसे ज्यादा जो कंज्यूम्ड कौन सा ऑयल होता है? कोकोनट ऑयल इज अ लिस्ट, यस, बिकॉज इफ यू सी दिस इमेज द पाम ऑयल इज द लार्जेस्ट कंज्यूम्ड एडिबल ऑयल. ठीक है, तो ऐसे ही क्वेश्चंस तो एग्जाम में आ रहे हैं आपके प्रीलिम्स के. और ये हम कहां से सीख रहे हैं? इट्स फ्रॉम द एक्चुअल आर्टिकल. आर्टिकल के अंदर से आप पढ़ना सीखो तभी आपको एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस भी मिलेंगे और दैट इज व्हाट द एग्जामिनर फ्रेम फ्रॉम क्वेश्चंस. ठीक है, जहां से वो क्वेश्चंस फ्रेम करते हैं, दिस इज व्हाट द सोर्स. सो दिस इज अबाउट द यस्टरडेज डॉक्यूमेंट.